Hello, students. Welcome. You know, we are doing with political executive that we started yesterday. We'll be continuing from yesterday's topic, the political executive. And it's part second of this lecture. We're going to learn about powers of the Prime Minister. Powers of the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. The constitution does not say very much about the powers of prime minister or the ministers or their relationship with each other, but as head of the government the prime minister has wide ranging powers. He chairs cabinet meetings, he coordinates the work of different departments. His decisions are final. In case disagreements arises between departments, he exercises general supervision of different ministries. All ministers work under his leadership. The prime minister distributes and redistributes work of the ministers. He also has a power to dismiss ministers. When the prime minister quits, the entire ministry quits. देखिए, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर में हमें यह बताया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की. प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या होने चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पावर्स जो हैं वो वाइड रेंजिंग हैं, बहुत ज़्यादा हैं. वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसके डिसीजंस फाइनल होते हैं. डिसएग्रीमेंट अगर हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो फाइनल सुपरविजन प्राइम मिनिस्टर करके बाकी मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शंस देता है. जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही उनको काम सौंपता है और उनके काम जो है उनसे हटाता भी है और वापस भी लेता है और फिर दोबारा दे भी सकता है. उसको पावर है कि वो मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी करे. जब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे तो सारी मिनिस्ट्री का इस्तीफ़ा होता है, फिर कोई मिनिस्टर नहीं रहता. अगर एक प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे दी तो सबका इस्तीफ़ा हो जाता है. Thus, if cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. The powers of prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. The media also contributes to his trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties. तो अब हमने ये बात समझनी है कि जो कैबिनेट है मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में वहाँ पे कैबिनेट में अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो पावर उस कैबिनेट के अंदर सबसे पावरफुल आदमी जो है वो वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है. रिसेंट डिकेड्स में हम पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स को इतने पावर मिल गए हैं कि आजकल
दिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहने लगे हैं लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी यहाँ पे बहुत रोल होता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड होते हैं उनका इस पोस्ट के लिए कंपटीशन हमेशा बना रहता है. In India too, we have seen such a tendency towards concentration of powers in the hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over public. इंडिया में भी ये ट्रेंड पहले से चलती आ रही है. यहाँ पे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको लोगों की बहुत ज़्यादा हमायत हासिल थी. इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कोलीग्स इन द कैबिनेट. इंदिरा गांधी जो है वो बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही है, अपने जो उनके मध्य मुकाबल थे उनके बराबर में. ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depends on the personality of person holding that position. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on powers of prime minister. तो अब जब एग्जांपल्स आ रही हैं नेहरू के, इंदिरा गांधी की, तो यहाँ पे हम पर्सनैलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी वजह से भी प्राइम मिनिस्टर्स के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन हालिया सालों में हमने ये देखा है जब कोलिशन पॉलिटिक्स इज इम्पोज कंसंट्रेट्स द पावर, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी, मेजॉरिटी में कोई पार्टी एक नहीं आ रही है, तो किसी एक पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है तो बाकी दूसरी जो पार्टी उनको सपोर्ट कर रही होती है तो उनको दबा के रखते हैं कि इस फैसले लेने में, फैसला साजी में उनका भी रोल रहता है. तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर्स की पावर उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, कोलिशन गवर्नमेंट में कम हो जाती है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. He also has to need to view of positions of coalition partners and other parties in those support. The survival of the government depends. अब कोलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्यों पावर कम हो जाते हैं? डिफरेंट पार्टीज़ की कोलिशन होती है, डिफरेंट पार्टीज़ के अपने मैनिफेस्टो होते हैं. एक पार्टी कुछ एक मैनिफेस्टो लेके आई होती है, दूसरी का कुछ और होता है. तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई फैसला ले तो दूसरी पार्टी वाले नाराज़ हो जाएंगे, तो वो विड्रॉ कर लेंगे, तो गवर्नमेंट खतरे में आ जाएगी. तो इस तरह से दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें ये प्राइम मिनिस्टर का रोल जो होता है वो कम पड़ जाता है. The president. While the prime minister is the head of the government, the president is head of the state. In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. The president of India is like the queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. The president supervises the overall functions of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of state. The president is not elected directly. The people by the people, the elected members of parliament MPs and elected members of legislative assemblies MLAs etc. elect him. A candidate standing for president's post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. At same time, president can never claim the kind of direct popular mandate
that the Prime Minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. अब प्राइम मिनिस्टर के मद्दे मुकाबल हम अगर प्रेसिडेंट के पावर्स को देखें तो प्रेसिडेंट क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है. इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स. वो सिर्फ नॉमिनल पावर्स ही उसके होते हैं, दिखावे के पावर्स ही होते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन की क्वीन की तरह है इंडिया का प्रेसिडेंट, जिसके ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं वो सेरेमोनियली होते हैं, सेरेमोनियल पावर्स ही होते हैं. आपने सेरेमनी है, आपने स्पीच मारनी है, आप बड़ा कोई मुल्क का कोई बड़ा दिन है तो उस दिन आपने स्पीच मारनी है, तो बस सेरेमोनियल पावर्स हैं आपके. द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. हालांकि वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस को सुपरवाइज भी करता है. द प्रेसिडेंट is not elected directly by the people. The elected members of the parliament, MPs, और देखिए उसको लोग इलेक्ट नहीं करते प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, MPs करते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, और MLAs जो होते हैं लेजिस्लेटिव असम्बलीज के, वो करते हैं. जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएँ, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स पड़ें, और इससे ये साबित होता है कि वो मुल्क को रिप्रेजेंट करता है. प्रेसिडेंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर की जैसा मैंडेट, इसलिए क्योंकि वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है. द सेम इज़ ट्रू फॉर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. इफ़ यू कैन कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, you would think that there is nothing that she cannot do. All governmental activities take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. All major appointments are made in the name of president. These include the appointment of the Chief Justice of India, the judges of Supreme Court and the High Courts of the state, the governors of the state, the election commissioner, ambassadors to the other countries. All international treaties and agreements are made in the name of the president. The president is the supreme commander of defense forces of India. But we should remember that president exercises all these powers only on the advice of Council of Ministers. The president can ask the Council of Ministers to reconsider advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. The president wants she can delay this for some time and send the bill back to parliament for a reconsideration, but if parliament passes the bill again, she has to sign it. देखिए प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के हम पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट के पावर्स में भी ऐसी बात है, वो बहुत कुछ करता है. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से इशू होते हैं. मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम से इशू होती हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स के हैं उनके जजेस की अपॉइंटमेंट है, गवर्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं अदर कंट्रीज़ के, सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट. लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो भी वो साइन करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ये सब करता है. वो डिफेंस फोर्सेस का कमांडर भी, लेकिन वो करता ये सब कुछ क्या है? ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वो काम करता है. हाँ, अगर प्रेसिडेंट एक बार उसको लगे कि ये ठीक नहीं है, वो वापस कर दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ये ठीक नहीं है. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा वही भेजे कि आप ये ठीक है आप करो, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चारा नहीं होता कि वो उसको साइन ना करे.
सब कुछ किया जाता है किसकी थ्रू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, साइन होता है प्रेसिडेंट का। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से अगर बिल पास होती है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट को भेजी जाती है असेंट के लिए। प्रेसिडेंट अगर उसको एक बार वापस कर दे, अगर पार्लियामेंट दोबारा पास करके फिर से भेजे, तो प्रेसिडेंट के पास चारा नहीं है कि उसको साइन ना करे। सो यू मे वंडर, what does the president really do? Can he do anything on her own at all? There is one very important thing she should do on her own: appoint the prime minister. When a party or coalition of parties secures a clear majority in the elections, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. The president appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to approve majority support in the Lok Sabha within a specified time. तो प्रेसिडेंट अपने आप कोई काम कर सकता है क्या? हाँ, प्रेसिडेंट एक काम अपने आप भी कर सकता है, और वो ये है, वो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम। हाँ, प्रेसिडेंट को अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना हो तो उस बारे में उसके पास डिस्क्रिप्शन होती है कि वो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर है उसको अपॉइंट करे। अगर मेजॉरिटी किसी को नहीं आती तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी ऐसे लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिसको वो उसे लगे कि वो प्राइम मिनिस्टर कि वो मेजॉरिटी साबित कर सकता है। तो इस केस में स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है उस बंदे को कि आप जाइए और मेजॉरिटी साबित करिए और आपको मैंने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर। So students, this was suffice for the day. We'll be continuing next class. So have a nice day. Thank you.